Good evening, students. So today we are going to start uh, with the science topic. Actually, we have already started. Last time we discussed certain things, and we are going to see that again. So I will just share the PDF with you once again so that you are aware and you understand it much better. So just give me a moment. Should I share the screen? Yeah. This is the PDF of the topic that we are seeing. This is the page that we have already completed in the chapter Respiration in Organisms, in which we learned about respiration, we learned about uh, the cells, and we also learned about how the energy is being transferred in respiration. So it is not all about the nodes and lungs. It's also happening in the cellular level because it is the one which helps reach the oxygen to the cell level. That's why it is called a cellular level of our body. Then we saw that it is uh, happening only after breaking the food into very tiny pieces, and then the energy is taken out from it. We convert it into the form of glucose, and then that food is broken down into carbon dioxide, and then further carbon dioxide and water if oxygen is present, and that is called as aerobic respiration. And without oxygen, it is called as anaerobic respiration, in which breakdown of food happens and it releases energy. Okay. And we also saw that reaction which is given now here in the PDF that I have. Actually, I couldn't get the latest PDF. So we saw that there was slight change. Same reaction is repeated twice. But then the correct one is glucose in presence of oxygen. So the first reaction is glucose. And upon the arrow, it is in the presence of oxygen. And then we get the uh, following constituents, like we get carbon dioxide and water only. But when there is no oxygen, in the absence of oxygen, we get alcohol, carbon dioxide, and energy is also released. So anaerobes, then we saw anaerobes like yeast, which can survive in the absence of air. Even if there is absolutely no air, still yeast can survive. So that is a special ability that it has, and so it is called as anaerobes. Now we're going to move to the next page. We also have covered this page, but we didn't see it in detail. So let's go in detail by reading it one by one, line by line, and we'll understand what it is. Okay. So yeast. So what is yeast that is given here? So yeasts are single-celled organisms. They respire anaerobically, and during this process, they yield alcohol. Yield alcohol. That means they give out alcohol. They are respiring. They respire anaerobically means again without oxygen, they or without air and oxygen, they are able to respire. And during this process, what they are giving out is called as alcohol, that substance they are giving out, which is then used to make wine and beer kind of products. Okay. Our muscle cells also can respire anaerobically. Muscle
cells, they respire anaerobically, but only for a short time. When there is a temporary deficiency of oxygen, that time, only for a short time, the muscle cells can respire. During heavy exercise, fast running, as it is given in the figure, cycling, walking for many hours, or weightlifting, the demand for energy is high. We need more energy. Our body needs more energy that time. If the supply of oxygen to produce the energy is limited, then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है बॉडी में, मिल नहीं रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तब क्या होगा? हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लिए हमारी बॉडी क्या करती? तो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते. But the muscle cells require respiration to be done. Energy is required. The energy साठी इथे रेस्पिरेशन होत आहे. ऑक्सिजन कशाला लागतंय? रेस्पिरेशन साठी. ओके. आणि का गरजेचं आहे? Let us see again. So reaction is given here again. Glucose represents the food, and in the absence of oxygen, it is giving out, the reaction is getting completed. It gives out lactic acid and energy. Now, have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तब आपका क्या हो जाता है? हेवी एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो मसल में क्रैम्प्स आ जाता है. ठीक है. जब अपन So the cramps that occur when muscle cells respire anaerobically. See, ये cramps जो होते हैं कब? मसल सेल्स जब एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, इसलिए क्रैम्प्स हो जाते हैं. तो जब ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करोगे तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी. Partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid turns muscle, it causes muscle cramps. तो क्या होता है कि जब ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन किया जाता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. यानी फूड को जब ब्रेक डाउन करते हैं इस प्रोसेस में तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो लैक्टिक एसिड अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे मसल क्रैम्प्स हमें सफर करना पड़ता है उससे. सो वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. इफ जेंटल मसाज करेंगे तो भी रिलीफ मिल जाएगा, या फिर एक हॉट वाटर में अगर हम बात करेंगे या फिर पैरों को रखेंगे, जिस 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 जगह पर अगर क्रैम्प महसूस हो रहा है उस जगह पर अगर हम हॉट वाटर से कोशिश करेंगे, मसाज करेंगे जेंटली, तो वो सारी चीजें दूर हो जाएगी. तो हॉट वाटर क्यों या फिर मसाज क्यों करना पड़ता है? बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्प्रूव आवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी. तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ेगा इससे. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increase. जो ऑक्सीजन का सप्लाई है मसल सेल्स का वो इंक्रीज होगा इसके कारण, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को improve करता है. This result in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. Okay. So last में at the end then you get carbon dioxide and water, which is the final process of respiration. लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि लैक्टिक एसिड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से हमें मिला है, लेकिन बॉडी के लिए ठीक है वो तो एनर्जी हो गया, चल जाएगा वो उससे काम, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए एट द एंड. सो लैक्टिक एसिड ऑल्सो गेट्स ब्रोकन, और लैक्टिक एसिड अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर बॉडी को फिर से परेशानी होती है.
This all is something that we have already studied. Now let's move on to 10.2 breathing, which again quickly we had seen, but again we will see it. So what is happening is when we are breathing, we are taking inside air rich in oxygen and giving out air which is rich in oxygen with the help of respiratory organs. तो जब हम सांस लेते हैं अंदर अपने नाक से तो क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है हवा के अंदर वो सारा हमारा बॉडी ले लेता है. इट इज कॉल्ड एज बीन रिच इन ऑक्सीजन. रिच इन ऑक्सीजन मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन का जो प्रमाण है उसमें ज्यादा होता है उस हवा में जो हम लेते हैं अंदर. और जब हम सांस छोड़ते हैं हमारे नाक से बाहर तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलता है. So this give and take happens. This inhalation and exhalation is what we called it. जब बॉडी सांस अंदर लेती है, हवा अंदर लेती है सांसों से, तो ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर ले लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हम जब छोड़ते हैं तो उसे एक्सेलेशन कहते हैं. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन. और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली शुरू रहती है हमारे बॉडी के अंदर. और ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जब तक ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीवित पशु पक्षी जो है, पशु पक्षी जो है, वो जब तक जीवित है तब तक सांस चलती रहती है. वो शुरू ही रहता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन. The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. With your pencil, underline this. What is breathing rate? तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप कि the number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितने बार करते हो? एक बार इनहेल कर दिया, फिर एक्सहेल कर दिया. इनहेल कर दिया, ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक छोड़ दिया, तो ये आपका एक ब्रीदिंग हो गया. तो ऐसे आप कितने बार करते हो वो आपको काउंट करना है 1 मिनट में. तो वो हो गया ब्रीदिंग रेट. सपोज 50 बार किया, एक आई एम जस्ट टेकिंग एन इमेजिनरी एग्जांपल, 50 बार किया आपने इनहेल एक्सेल जो भी है प्रोसेस, 50 बार किया, 50 बार ब्रीदिंग हुआ आपका, प्रॉपर साइकिल हुआ. साइकिल बोलते हैं उस चीज को, यानी साइकिल मीन्स व्हाट? इनहेल एक्सेल, ये हो गया एक साइकिल. वैसे कितने साइकिल हो गए? 50 साइकिल हो गए मान के चलो, तो उसे कहेंगे ब्रीदिंग रेट. तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि द ब्रीदिंग रेट इज 50. ये 50 बार आपने क्या किया? 1 मिनट के अंदर सांस ली, सांस छोड़ दी, ये साइकिल आपने कंप्लीट किया, ब्रीदिंग किया. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही टाइम पे एक ही साथ आप सांस ले भी रहे हो और सांस छोड़ भी रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं कि नाक, हमारी नाक में दो होल्स है, वी हैव टू होल्स, so doesn't mean that one side is for inhaling and the other is for exhaling. No, एक तर इनहेलेशन होईल नाही तर एक्सेलेशन होईल. एक तो इनहेलेशन होगा या तो एक्सेलेशन होगा. जब इनहेलेशन होगा उसके बाद एक्सेलेशन होगा. इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है. कभी आप आपकी जो ब्रीदिंग है वो कभी ऑब्जर्व करोगे तो यही आपको पैटर्न इसमें नजर आएगा. अ ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. एक ब्रीद में एक इनहेलेशन और एक एक्सेलेशन. एक बार सांस ले ली, सांस छोड़ दी आपने, तो इसका मतलब एक साइकिल यानी एक ब्रीथ आपका हो गया. ऐसे आपको
करना है। नीचे एक पिक्चर दिया है, फिगर 10.2, होल्डिंग ब्रेथ। ब्रेथ को होल्ड करना है, कैसे करोगे आप? तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर होल्ड करना है आपको ब्रीथ को, तो क्या करोगे आप? दो फिंगर्स की मदद से भी आप आपके नाक को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि what is the importance of this breathing, of this respiration that we are doing. हम कभी कभी नाक बंद कर देते हैं। देखिए, अगर हमें कोई जो बदबू है जो हमें पसंद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, नाक को इस प्रकार से बंद कर देते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग को स्टॉप कर रहे हैं कुछ समय के लिए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग ब्रेथ। फिगर में दिया है ये सारी चीज पिक्चर में, लेकिन उसको टेक्निकली साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग ब्रेथ। इस एक्टिविटी को बोलेंगे ब्रेथ को होल्ड करना। लेट्स चेक द नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन हियर। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? So let us do one activity. So one activity is given here. Can you see table 10.1 in your book? Is it there in your book? Just check and tell me. Table 10.1. Yes, yes. So table 10.1, changes in breathing rate under different conditions. तो अलग अलग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट क्या है, वो चेक करने वाली ये एक्टिविटी है। इससे हमें पता चलेगा क्या, कि कांस्टेंट हमारी ब्रीदिंग होती है या चेंज होती रहती है। ये हमें पता चलेगा प्रैक्टिकली। ओरली हम बोल देंगे हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट्स चेक द टेबल। टेबल में क्या दिया है, इट्स गिवन दैट नेम ऑफ द क्लासमेट। क्लासमेट का नाम लिखना है आपके, फिर ब्रीदिंग रेट चेक करना है। नॉर्मली, अगर कुछ नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, बस खाली बैठा है, बात कर रहा है, तब उसका ब्रीथिंग रेट क्या है वो चेक करना है। 1 मिनट के लिए ही चेक करना है ना हमें, कि इन 1 मिनट हाउ मच ब्रीथ इज पॉसिबल। आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया 10 मिनट्स के लिए, ब्रिस्क वॉकिंग थोड़ा सा फास्ट में, स्पीड में, थोड़ा 10 मिनट्स के लिए, तब ब्रीदिंग रेट क्या है चेक करना है। रनिंग वेरी फास्ट, तो फास्ट लिखा है यहाँ पे, मतलब जोर से भागना है, ओनली रनिंग नहीं करना है, फास्ट रनिंग करना है 100 मीटर के लिए, फिर ब्रीदिंग रेट चेक करना है उस वक्त। एट रेस्ट, रेस्ट मतलब लेटे हुए हो, सो रहे हो, तब। तो ऐसा टेबल बना के भी हम लोग ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और तब हमें पता चलेगा कि वेदर ब्रीदिंग रेट इज सेम और नो। What do you think? Will the breathing rate be same when we are normal, when we are walking, when we are running, when we are at rest? Will the same breathing will happen in all these four activities? So the answer is quite simple. No. Because when we are normal, that time we are normally breathing. नॉर्मल मध्ये कळत पण नाही ब्रीदिंग, पता भी नहीं चलता है ब्रीदिंग, लेकिन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर ब्रिस्क वॉक, फिर रनिंग फास्ट 100 मीटर्स, फिर रेस्ट। Let's see activity 10.2. Generally, we are not aware that we are breathing. आत्ताच सांगितलं मी, जैसे मैंने अभी बोला कि नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलता हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है। It's happening continuously. That's why we are alive. However, if you try
you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and out in a minute. ब्रीदिंग होतीये का नाही हे चेक करू शकतो आपण. शांत बसायचं आणि फक्त लक्ष द्यायचं. आपण आत श्वास घेतोय, सोडतोय. आत श्वास घेतोय, सोडतोय. And that you have to count in a minute, 1 minute's time. Did you inhale the same number of times as you exhale? Now count your breathing rate. Number of breaths per minute after brisk walk and running. Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your findings. Tabulate means वही वो टेबल जो दिया है उसमें सारी रिकॉर्डिंग लिखनी है आपको, सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो भी आपको काउंट मिला वो लिखना है. एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स. और दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, she breathes faster. तो जब बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस. अंडरस्टूड what we are learning here? Yes. As a result, more oxygen is as a result, more oxygen is supplied to our cells. So more oxygen is supplied to our cells and it speeds up the breakdown of food and more energy is released. फूड मधून एनर्जी मिळते आणि ती एनर्जी अशा पद्धतीने बॉडीला मिळते. तो क्या होता है कि बाद में, इसलिए कभी कभी एक्सरसाइज करने के बाद बहुत जोर से भूख लगती है, क्योंकि जो एनर्जी बॉडी में से चली गई है रेस्पिरेशन के कारण, सारे यूज के कारण, तो अभी हमें उन्हें फिर से उसे गेन करना है. इसलिए so does this explain why do we feel hungry after physical activity? So that just now I answered that yes, we feel hungry after a physical activity. त्यामुळे आपल्याला भूख लगती, हमको भूख लगती है अचानक से, अगर एक्सरसाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली भूख लगती है. दैट्स व्हाई इट इज सेड, इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद नाश्ता नहीं करना है. पहले हमें एक्सरसाइज करनी है. उठने के बाद पहले तो मेडिटेशन करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है. आफ्टर एक्सरसाइज शावर, शावर के बाद फ्रेश होने के बाद फिर पेट भर के नाश्ता करना है. जो भी आपने एक्सरसाइज किया था इसके कारण आपकी भूख बढ़ गई है, आपको भूख लगी है, तो वो डेली रूटीन हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है. चलो नेक्स्ट क्या दिया है. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? Drowsy. Drowsy यानी क्या, नींद में हो आप, that time नींद में हो, सो रहे हो, तब ऑक्सीजन का लेवल कैसा है ये पूछा है यहाँ पे. ओके. Then one information is given in the blue box. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. Average adult human, adult, मोटी मानसों. बड़े जो होते हैं वो 15 या 18 बार 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हैं. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. लेकिन जब हेवी एक्सरसाइज करोगे तो 25 बार आप 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हो. When we exercise, while we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हम तब लेते हैं. So figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. नॉर्मल दिन में हम क्या क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, एक बार बैठ के काम करते हैं, खड़ा होके काम करते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हाथ के मूवमेंट्स, लेग के मूवमेंट्स, हम रेस्ट भी करते हैं.
बहुत सारी चीजें हम दिन भर करते हैं. तो पहली wants to know why we yawn when we are sleepy or drowsy. So can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which will be fastest? Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. ये जो 10.3 एक्टिविटी है वो कैसे करनी है ये बताया है इसमें. सो लेट अस सी. अब यहाँ पे 6 अलग इंसान है उनकी एक्टिविटीज दी है. सो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने बोला है कि नंबर असाइन करना है 1 से लेकर 6 तक. पिक्चर को आपको क्या करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल यू हैव टू नोट इट डाउन. उसको नंबरिंग करना है. कैसे नंबरिंग करोगे? तो पहला रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है? सबसे कम कहाँ पे होगा बताओ? टेल मी. इन 10.3 द लोवेस्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी फॉर विच एक्टिविटी? Sleeping. Yes. So you will write there 1 and make a round like this. Then after that, which activity you think will need little bit more breathing rate than sleep? Because we are writing it into increasing rate of breathing. So that means ascending order. Yes. Study. Okay. Then Then walking. okay, this old person is walking. Then Then cleaning clothes. okay. Then uh, um, exercise. No, no. Uh, go go on terrace that We call it as climbing. yes, climbing. Climb ladder and then this. Okay. So I will Then not say whether exercise. okay. So I will not say whether the answer is right or wrong. It's all just an activity. So whatever you feel that way, this is just so that you have to, as a student, experience this. You have to observe. You have to do it. That's why it is called as an activity. Very good. Your participation in the activity is highly appreciated by me, and I am giving you a boom. Am I audible? Yes. There was some technical error, so I came out of the meeting. So we are discussing about the breathing exercise.
how do we breathe? Okay, the PDF is not visible. No. Is the PDF okay? I don't know what technical issue suddenly came and it went. Anyways, it's not sure. Is it showing to you how much time is left for the meeting? Is it showing something like that? How many Sir, your voice not minutes proper. are left? 2. Okay, 2 minutes. Okay, fine. Then do one thing. Read the next part of next paragraph and study it. Write the examples. Complete your books, notebooks, everything, and we will meet again. Bye. Bye, sir.